So students, today we will do two chapters, chapter 11 and 12th. So first of all, we will do chapter 11 and you all have to do this work in your copies. Both the chapters and model task paper 1 also. All work you have to do in your copies, GK copies. So first of all, write down today's date 16/7/21. After that, write down chapter number 11, then movement of animals. Its chapter name. After that, write down the heading, fill in the blanks. First is I am a dash and I dash on the branches of the tree. So write down the answer, monkey and swing. Second one is I am a dash and I dash with my baby. Its answer, kangaroo and hope. The third one is I am an dash and I dash throughout the day. So answer is elephant walk. Fourth, I am a dash. I dash for a long distance. Answer is horse gallop. Fifth, I am a dash. I dash in the water. Answer is fish swim. Last one is I am a dash. I dash on the ground. Write down snake crawl. Only this much is chapter 11. After that, write down the heading chapter number 12. Listen students, I have started chapter 12 from this page only, but you all have to do on new page. You have to do this chapter 12 from new page. आप लोग को चैप्टर 12 न्यू पेज से स्टार्ट करना है. पेज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 और आप चैप्टर 12 लिखने के बाद यहाँ पर चैप्टर 12 का नेम भी लिखेंगे. After that, write down question number 1. Give one word for the following. First is it guards a house. So answer is dog. Second, it gives us wool. Write down the answer, sheep. Third one, it pulls load for us. Write down the answer, donkey. Then it gives us milk. Answer is cow. Next, it is a friend of the farmer because it digs soil. Write down the answer, earthworm. Sixth, it lays eggs which are eaten by us. Answer is hen. Seventh, it plows our fields. Answer is ox. Last one, it gives us meat which is called mutton. Write down the answer, goat. After that, write down question number 2. How many eggs lays a hen in a year? Means कि एक hen 1 year में कितने eggs देती है. हमें इसका आंसर लिखना है. Write down the answer, 19 dozen eggs. This is the answer, 19 dozen eggs. So here is 12 chapters completed. Then you will write model task paper 1. First of all, you will do chapter 11, then chapter 12,
Then model task paper 1. This is the heading. Then first heading is A. Take the correct answer. First is oldest plant on the earth is. Answer is P. Listen class, मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट राइट आंसर लिख दिया है, उसके सामने टिक कर दिया है. तो आप लोग को भी यही करना है. आप बुक से देख लें, बुक से हेल्प ले लें कि 3 ऑप्शंस क्या हैं. उसके बाद जो राइट आंसर है डायरेक्ट वही लिखें. 3 ऑप्शंस लिखने की नीड नहीं है किसी को. Here is written only oldest plant on the earth is. Then write down P and mark tick mark. Okay, now next is we get sugar from this plant. So write down the answer sugarcane and tick. Then which is the king of flowers? Rose. Then slowest animal is snail. जब आप ये सारे आंसर्स लिखेंगे तो सेम उसके सामने टिक मार्क लगाएंगे. सारे स्टूडेंट्स टिक मार्क भी लगाएंगे. इससे पता चल जाएगा कि ये ठीक द करेक्ट आंसर्स है और आपने राइट आंसर लिखा उसके सामने टिक कर रहा है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर 1. Now next question is matching. Write down B, matching. Then largest bird, ostrich, plugs our fields, ox. It gives us wool, sheep, and heaviest animal, whale. Then write down C, question answers. First question is name the biggest flower of the world. वर्ल्ड का हमें सबसे बड़ा जो फ्लावर है उसका नेम लिखना है. इट्स नेम इज रफलेशिया. RAFFLESIA. नेक्स्ट नेम 2 फ्लाइटलेस बर्ड्स. कीवी, ऑस्ट्रिच. आपको पता है फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन सी होती हैं? जो उड़ नहीं सकती. तो उसके नेम्स लिखने हैं लाइक कीवी एंड ऑस्ट्रिच. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3. विच इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? फास्टेस्ट एनिमल वर्ल्ड का कौन सा है? चीता. राइट डाउन CHEETAH, चीता. एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल ऑन द अर्थ? सबसे बड़ा एनिमल लैंड पर कौन सा है? एलिफेंट. ELEPHANT, एलिफेंट. So this much work you have to do in your copies.